Uh, Now, in this topic, we will deal with the numbering system. That's used in Sigmatropic. Rearrangements. The numbering system that's used in Sigmatropic rearrangements. As you might have seen, I quoted to you some examples where I have written some rearrangements as 1,5 rearrangements, 1,3 rearrangements, 3,3 rearrangements, 2,3 rearrangements. So this numbering system is unique to these Sigmatropic rearrangements, and how we can say what kind of numbers you have to use in order to designate a particular type of Sigmatropic rearrangement. For that purpose, this numbering system is used, and this numbering system is quite different. This numbering system is quite unique for these Sigmatropic rearrangements. You have to note down some points in order to understand this numbering system. So I'm describing how you can designate a particular kind of numbering system to a particular type of Sigmatropic rearrangements. So here we go. Firstly, what you will have to do, you have to mentally break the sigma bond. You have to mentally break the sigma bond in the reactant. And give a number 1. Mark my words. Firstly, mentally break the sigma bond in the reactant and give a number 1 label to the atoms that were attached by this sigma bond which you are breaking. This is the first point. What is the first point? Mentally you have to break the sigma bond in the reactant, and you have to give number 1 to the atoms, both the atoms which were attached by this sigma bond. So this is the first step. Next step is, what you have to do? Next step is then look at the new
sigma bond in the product. प्रोडक्ट में जो नया सिग्मा बॉन्ड बना है वो देखना है आपको, वो कहाँ पे है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, देन count the number of atoms count the number of atoms in each of the fragments, that connect the broken sigma bond, and the new sigma bond. इस स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपने क्या किया, मेंटली ब्रेक किया आपने सिग्मा बॉन्ड को रिएक्टेंट में, और जो दो एटम उससे जुड़े थे उस सिग्मा बॉन्ड से, उन दोनों को नंबर किया आपने, लेबल उन दोनों को किया 1, दोनों को दिया, इसको भी दिया 1 और इसको भी दिया 1। उसके बाद क्या करना है, लुक एट द न्यू सिग्मा बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, वो देखना है वो कहाँ पे है। उसके बाद आपको काउंट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फ्रैगमेंट्स दैट कनेक्ट द ब्रोकन सिग्मा बॉन्ड एंड द न्यू सिग्मा बॉन्ड। पुराना वाला सिग्मा बॉन्ड और जो नया वाला सिग्मा बॉन्ड जो है, ये कितने एटम से ये दो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, इसमें वो कितने एटम से जुड़े हैं वो दोनों आपको काउंट करने, वो कितने एटम्स आते हैं। उसके बाद ये जो दो नंबर्स आएंगे आपको, द टू नंबर्स जो दो फ्रैगमेंट्स में होंगे, द टू नंबर्स आर पुट इन ब्रैकेट्स, इन दो नंबर्स को ब्रैकेट में डाला जाता है with the smaller number stated first, जो उसमें स्मॉलर नंबर होगा वो पहले लिखा जाता है, stated first. This is how you have to give the numbering to the sigmatropic rearrangements. ऐसे आपको समझ नहीं आएगा. Let me give you some examples.